Hello friends. So in today's class, we are going to discuss about information and investigation under CRPC, Criminal Procedure Code. So we all know that the information and investigation has been provided under Chapter 12 of CRPC, which is from section 154 to 177. I'm sorry, 176. 176. So from section 154 to 176, chapter 12 continues, and under this chapter, the information and investigation under CRPC has been provided. Right. Now, to talk about information is that stage which sets the criminal procedure or criminal proceedings in motion. क्या होता है कि जब भी कोई ऑफेंस होता है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हैज टू बी सेट इन मोशन, बट at the very beginning, the information of that offense has to be provided to the authority, either to the police officer or to the judicial magistrate. Right. Now, this information is of two types. Information is of two types. In the first type, where the information is provided under cognizable offense. If a cognizable offense is committed, then the information provided has been dealt under section 154. In case of cognizable offense, the information provided to the police has been dealt under section 154 of CRPC. Whereas in the second type, in case of non-cognizable offenses, this has been dealt under section 155 of CRPC. Now, you all already know the cognizable offenses are those offenses which are serious in nature, and non-cognizable offenses are those offenses which is not so serious as cognizable offenses. So in case of non-cognizable offenses, it has been dealt in other different section because the investigation procedure also is different than the cognizable offenses that we will discuss when we will study about the investigation. अब ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उसकी जो रिपोर्ट बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. नाउ एफआईआर, ये जो एफआईआर होता है, द एफआईआर इज गिवन ओनली इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस and it is not given in case of non-cognizable offenses. Whereas in case of non-cognizable offenses, an NCR is formed, that is non-cognizable report. ठीक है, non-cognizable report, NCR is formed. ठीक है. नाउ अगर हम सेक्शन 154 के बारे में डिस्कस करें, सेक्शन 154 में क्या कहा गया है कि सेक्शन 154 में कहा गया है कि whenever a cognizable offense takes place, an informant gives the information to the police. Right. So for an FIR, first information report, the elements, there are some elements under section 154. There are some elements under section 154. The first element has to be that it has to be a cognizable offense. It has to be a cognizable offense. Right. The second element is that the information can be given either in written form or in oral form. In written form or in oral form. अगर रिटन फॉर्म में दिया गया है तब तो ठीक है,
बट इन केस ऑफ ओरल फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है, इफ द इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड इन ओरल फॉर्म, देन the information provided in oral form has to be reduced into writing. If in oral form it has to be reduced in writing. By the police. Now, once the written form has been made, if it has been provided in oral form, it has been reduced into written form, or it has been provided into written form, then the content of the FIR will be read over to the informant, so that he understands कि क्या लिखा गया है, FIR में actually क्या लिखा गया है, he understands. It has to be read over to him. It has to be read over to the informant. It has to be read over to the informant. And finally, the signature of the informant is necessary. Right. So these are the elements of an FIR. Whenever cognizable offense takes place, information is provided. It has to be read over to the informant. It has to be first reduced in writing, read over to the informant, and then the informant will sign the content of the FIR. So FIR is created. Now, once the FIR is created, now even under section 154 itself, it has been provided that a copy of the FIR has to be provided to the informant free of cost. This is an obligation. This is mandatory for the police to give a copy of the FIR free of cost to the informant. It has been provided under section 154 itself, right? Now, this is the information provided for cognizable offenses. Whereas in case of non-cognizable offenses, which has been provided under section 155, a general the information provided under for non-cognizable offenses has to be entered into a copy, into a registered as provided by the procedure mentioned by state government. Generally, it is registered under general diary, right? So this is the information part where both the kind of information for cognizable and non-cognizable offenses has been provided. Now, once the information is provided to the police or the authority, the investigation start, right? Now, what is investigation? What is the definition of investigation? इन्वेस्टिगेशन का पर्पस हो या डेफिनेशन हो, it is the process of collection of evidence. It is the process of collection of evidence. Now, don't confuse the word collection with admission. Don't get confused about the word collection with admission. The admission of evidence takes place in court. The admission of evidence does not take place in police station. It is only the court which is authorized to admit an evidence, right? So admission of evidence in the court is called trial. But in case of investigation, the evidence is collected by the police or the prosecution, right? So the collection is different from admission. Now, under how many sections investigation can be conducted? There are several sections. In several manners, the investigation is conducted.
let us see in what manners, in what different manners the investigation can be conducted. Right. Number one, section 154. Under section 154(3), it has been provided that if the police does not take the FIR, if police refuse to take the FIR given by the informant, ऐसा होता है, it happens many times in our country. So what can be done is, under section 154, it has been provided that the content of the complaint, the content of the written complaint can be given by post to the superintendent of police. Superintendent of police को ये content of the complaint को दिया जा सकता है, and when the superintendent of police, SP of the police, thinks that it is necessary to conduct an investigation, he can order an investigation. He can order an investigation. He can order an investigation. He can do it by himself, or he can depute a subordinate police officer for the investigation. So this is one manner under section 154(3). When the police refuse to take the FIR, then this is a remedy that is available to the informant or the common people, that they can write directly to the SP of the district. Number two. So जब 154(3) में कहा गया, obviously it is about a cognizable offense. Number 2 is section 155, which is about non-cognizable offense. तो non-cognizable offense के लिए the police does not have the power to directly conduct investigation, right? So what police will have to do is, the police will have to submit, the police will submit it to the magistrate, that is judicial magistrate. And with judicial magistrate's permission only, investigation can be conducted under on a non-cognizable offense. अब यहाँ पे एक चीज बता देता हूं, देखो, section 154 is about cognizable offense and section 155 is about non-cognizable offense. Now suppose a complaint has been lodged to the police, जहां पे 3 offenses के बारे में कहा गया है. There has been mention of 3 different offenses. Now out of these 3 offenses, there are only 1 cognizable offense and 2 non-cognizable offense. So in that case, if the offense will be considered as a cognizable offense, and it will be considered an FIR, and the police will have the power to investigate the offense without the permission of the judicial magistrate, because in case of cognizable offense, पुलिस को judicial magistrate की permission की जरूरत नहीं पड़ता है, जो section 156 में कहा गया, that we will come to just after some time. But in case of non-cognizable offense, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत पड़ता है. लेकिन किसी भी ऑफेंस में, इफ देयर आर मोर देन 1 ऑफेंस इन 1 कंप्लेंट एंड देयर आर इवन एटलीस्ट 1 कॉग्निजेबल, देन द एंटायर थिंग विल बी कंसीडर्ड एज कॉग्निजेबल एंड पुलिस विल हैव द अथॉरिटी और द पावर टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन विदाउट द परमिशन ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, राइट? सो दैट इज वेयर वी कम टू द नेक्स्ट, इन द थर्ड मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(1). इसमें कहा गया है, इसमें यही चीज कहा गया है कि द पुलिस विल हैव ऑल द पावर टू इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस. देखो, जब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था सेक्शन 155, पुलिस के पास डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करने के पावर नहीं था. इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी मैजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत पड़ता, लेकिन वहां पे परमिशन मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन तो कर सकता है, लेकिन फिर भी अरेस्ट भी नहीं कर सकता. फिर वहां पे अरेस्ट करने के लिए भी वारंट की जरूरत पड़ता है in case of non-cognizable offense. But in case of cognizable offense, जो कि सेक्शन 156(1) में कहा गया है कि पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन की तो पावर है ही मैजिस्ट्रेट के परमिशन के अलावा, उसके साथ साथ बिना वारंट के अरेस्ट का भी परमिशन है, पावर है. ठीक है?
So under cognizable offense, under 156(1), the entire prerogative of the investigation rests with police, and the court is barred from interfering in the investigation procedure because it is entirely in the domain of executive, and the judiciary cannot interfere in the investigation method. Now there are another method, another manner under which the investigation is conducted. Section 156(3). Right. Now this section has been very important, और इस सेक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में, चाहे वो जुडिशियरी का एग्जाम हो और भी लॉ के बहुत सारे एग्जाम हो। सेक्शन 156(3) ये कहता है कि द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन order investigation by police. Can order investigation by police. तो इस केस में होता क्या है कि जब भी कोई कंप्लेन लॉन्च होता है तो the common people has two options. The people or the informant can go to police station, lodge an FIR under section 154. Under section 154. Or he can also directly go to the judicial magistrate and file a complaint. Under section 199. I'm sorry, under section 200. अंडर सेक्शन 200. तो जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन लॉन्च होता है, द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन डायरेक्टली टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 190, और द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन order under section 156(3) to the police that there is a cognizable offense, there is a suspicion of cognizable offense. So जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर 156(3) पुलिस को ऑर्डर देता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो पुलिस को क्या करना पड़ता है? पुलिस को सबसे पहले अंडर सेक्शन 154 FIR लॉन्च करना पड़ता है. नाउ दिस बिकम मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू लॉन्च एन FIR, राइट? और FIR लॉन्च करने के बाद फिर वो इन्वेस्टिगेशन करता है अंडर सेक्शन 156(3). ठीक है, सो दिस इज अनदर मैनर इन विच द इन्वेस्टिगेशन टेक्स प्लेस. इसी के साथ साथ एक और है सेक्शन 202. नाउ देयर इज अ डिफरेंस. तो सेक्शन 202 में भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये ऑर्डर देता है, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है, ठीक है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्शन इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156(3) एंड इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 202. द डिफरेंस इज दैट जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता है, उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे तो उसको अंडर सेक्शन 202 में देना पड़ता है. लेकिन अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लिया रहता है, कॉग्निजेंस लेने से पहले अगर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देता है, तो उनको सेक्शन 156(3) के अंदर ये देना पड़ता है. ठीक है, सो these are all manners of investigation. There are some other manners as well, right? So this was the fifth number of manners in which the investigation can be conducted. Number six, under section 158, होता ये है कि सेक्शन 157 deals with occurrence report. अब ये ऑकरेंस रिपोर्ट क्या है? ऑकरेंस रिपोर्ट ये है कि जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ रहता है तो इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द पुलिस ऑफिसर टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट दिस FIR टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को इसके एक नोटिफिकेशन देना पड़ता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑकरेंस रिपोर्ट. अब in what manner the occurrence report is to be submitted has been provided by the state government. ठीक है,
तो बहुत बार ऐसा होता है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा प्रोवाइड कर सकता है कि इवन और बाय डिफॉल्ट जो मेथड प्रोवाइड किया गया है सीआरपीसी में, वो ये कहता है कि जो पुलिस स्टेशन है, एसएचओ है, he will first give the report to a superior police officer, and then through the superior police officer the report is to be submitted to the judicial magistrate. ठीक है। अब अंडर सेक्शन 158 ये कहता है कि सपोज जो एसएचओ है, जो पुलिस ऑफिसर है पुलिस स्टेशन के, उन्होंने रिपोर्ट जमा किया और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि he will not conduct an investigation because he thinks that no offense has been committed. So in that report he gave the report that he will not conduct investigation. So that report he has to send to the judicial magistrate under section 157 of CRPC. तो सबसे पहले तो वो एक अपने सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को भेजेगा और सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के थ्रू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को भेजेगा। तो जिस वक्त सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को उन्होंने भेजा और सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को ही लगा कि नहीं इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सो इन दैट केस द सुपीरियर पुलिस ऑफिसर कैन ऑर्डर अंडर सेक्शन 158 टू द पुलिस ऑफिसर टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। There are another manner. Now suppose the superior police officer also accepted the report of the SHO and forwarded it to the judicial magistrate. Now the judicial magistrate thought कि no, investigation should be conducted. There is a suspicion that the offense might have been committed. So under section 159, again judicial magistrate can order then investigation to be conducted. Right. So these are the manners, these 7 manners under which the investigation is conducted. So there are these 7 sections, 7 provision in the CRPC overall जिसमें investigation किया जा सकता है। पहला है section 154(1), दूसरा section 155, तीसरा section 156(1), चौथा सेक्शन 156(3), पांचवा सेक्शन 202, 6th section 158 and 7th section 159. There are so many provisions in CRPC under which an investigation can be conducted.